Okay, let's start the lecture. So, uh, so now we will discuss uniform convergence. This is actually series and sequence of functions. जैसे आपने series and sequence of numbers किया है ना, वैसे ये है series and sequence of functions. Pen. Okay, this is series and sequence of functions. Series and sequence of functions. So, sequence, convergence of sequence, that limit is unique. अगर limit exist होगा, then it is always unique. So now we talk about sequence of functions, not sequence of numbers, sequence of functions. Let fn n runs from 1 to infinity be a sequence of real valued functions, and this sequence is defined on, because their functions, they have domain, and each term of the sequence have same domain, okay, defined on interval, okay, I. Usually we are taking closed interval, okay. So this base sequence of functions. Now for each x, now how can we find its limit? How can we define its limit? That's very important. We can define the limit of numbers, है ना? जैसे आपके पास sequence है 1, 2, 3. The limit of this sequence is infinite. You have a sequence 1 by 2, 1 by 3. So you have defined the limit of numbers, sequence of numbers, okay, real numbers. But how can we define the sequence of a function, limit of a sequence of a function? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? We first fix a point of a domain. So let's do this for each. Actually हम वहीं आ जाएंगे, sequence of numbers पर ही हम आ जाएंगे, because it's a real valued function. So for each x in AB interval AB, f and x, it's actually a real number. So for each x in closed interval AB, this one f and x, okay, is a sequence of real numbers, okay, because fn is a real valued function. So now we can talk about the convergence of this sequence. If for each x in A closed interval AB, this sequence sequence of real numbers f and x converges. Suppose this sequence converge होगी, and it has a limit, then we'll denote that limit obviously depends on x. अगर हम x की values को vary करेंगे ना, so we'll have a different sequence, so that means we will have a different limit actually. And let it be suppose this if for each the sequence f and x converges, and let the limit of f and x be equal to fx. Then this f is a function. Obviously it's a function because the limit is actually unique. Limit of f and x, for each x you have a unique number, actually its limit. Then the function, then
मैं इसकी एग्जांपल्स आपको दूंगा. देन द फंक्शन f of x, this function, it's called the pointwise limit, is called a pointwise limit of the sequence, of the given sequence. इसको हम कहते हैं pointwise limit of this sequence of functions. इसकी कुछ एग्जांपल्स हम लीजिए. So let's define let fn be defined by, हम इसको सपोज ऐसे डिफाइन करेंगे, डिफाइंड बाय fn of x and choose any sequence of functions. Say let's suppose that it be okay, let's take here say x power n, where 0 less or equal to x less or equal to 1. तो जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है ना fn, इसका जो डोमेन है, हर किसी टर्म का, हर किसी फंक्शन का डोमेन 0 to 1 है. So now if you fix x, see let's take x equal to any number, take say x equal to any number in this domain, okay, 1/2. Then what's this fn of 1/2? It's equal to 1/2 power n. वही जो मैंने कहा आपसे, अगर कोई भी x आप लोगे fn x, it will be a sequence of number. तो ये आपके पास एक ये sequence मिल गई 1/2 power n, and it converges to 0 as n approaches to infinity, right? Now for x equal to say 1, we have fn x equal to 1 power n, and that converges to 1 because its value is 1 for each n as n approaches to infinity. So you can see that this limit n approaches to infinity fn x, it has two values. One for 0 less or equal to x less than 1, वहाँ पर इसका वैल्यू 0 आ जाएगा. If 0 less or equal to x less than 1, and its value is and it's equal to and the same limit, okay, and limit of fn x, it's equal to 1 if x is equal to 1. So that is, मैं इसको यहाँ से देखता हूँ, that is the limit n approach to infinity fn x. ये जो लिमिट फंक्शन इसकी है, इसकी दो वैल्यूज, एक तो 0 है for 0 less or equal to x less than 1, and its value is 1 for x equal to 1. So अगर इस लिमिट फंक्शन को मैं fx से डिनोट करूँ, let's denote this limit function by fx. The limit of fn x equals to say fx. So what's then fx? Then our fx is this function. It is 0 for 0 less or equal to x less than 1, and its value is 1 for x equal to 1. तो आपके पास गिवन सीक्वेंस है, मैंने डिफरेंट वैल्यूज़ पर इसको कैलकुलेट किया है इस सीक्वेंस को. तो ये सीक्वेंस अब रियल नंबर्स आ गई नंबर्स पर. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप इसमें देखोगे ना, सपोज मैं f1x लूँगा, मैं इस सीक्वेंस की पहली टर्म लूँगा, व्हाट विल बी f1x इज x. सो दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन है ना. इसी तरह से अगर आप सेकंड टर्म निकालोगे, सेकंड टर्म कौन सी फंक्शन होगी, उसकी डेफिनेशन f2x इज x स्क्वायर, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है. सो यू कैन सी दैट fn x इक्वल टू x पावर, इट इज कंटिन्यूअस फॉर ईच एन. सो दिस वन, व्हाई वी आर डूइंग दिस, एक्चुअली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई वी आर डूइंग दिस, एक्चुअली हमें ये देखना है कि अगर ये जो सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, अगर इनकी कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होगी, कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, क्या लिमिट फंक्शन की वो प्रॉपर्टी होगी. जैसे यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि f1x भी कंटिन्यूअस है, f2x भी कंटिन्यूअस है, f3 है, दे आर ऑल कंटिन्यूअस. सो इट्स अ सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस. एंड देन व्हाट अबाउट इट्स लिमिट, इसकी लिमिट फंक्शन क्या उसकी एक प्रॉपर्टी है, क्या वो कंटिन्यूअस फंक्शन है. एंड दैट यू कैन सी हियर, जो इसकी लिमिट फंक्शन आ गई, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो. ये जो लिमिट फंक्शन है ना, लिमिट फंक्शन इज दिस वन, क्या ये कंटिन्यूअस है, ये लिमिट फंक्शन, इज इट कंटिन्यूअस.
चेक कर सकते, इसको याद नहीं हो सकता है ब्रेकिंग पॉइंट पे। हाँ, ब्रेकिंग ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा है? देखिए हम इसका ग्राफ भी डाल सकते हैं ना, कैन वन पे। फाइंड इट्स ग्राफ 0 to 1 पर ये डिफाइन, ठीक है। 0 to 1 पर इसका वैल्यू तो 0 ही है, बट 1 पर इसका जंप हो रहा है ना, इट इज लाइक दिस, abruptly its value is equal to 1 है ना। So it's discontinuous at x equal to 1, therefore it's not continuous on the closed interval 0 1, ठीक है। ये कंटिन्यूस, क्योंकि कंटिन्यूटी होने के लिए हर किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस होनी चाहिए। नाउ सो clearly f and x this equal to x power n is continuous for each n greater or equal to 1, but f of x is not continuous, is not, so continuity preserve नहीं रहती है under this limit, under this point wise limit continuity is not preserved. So now let's define this limit function properly, okay। तो ये एग्जाम आपको समझ आ गया कि ये पॉइंट वाइज लिमिट हम क्यों इसको कहते हैं। पॉइंट वाइज लिमिट हम इसलिए कहते हैं, पहले हम पॉइंट को फिक्स करते हैं, जब आपने वंस यू हैव फिक्स्ड पॉइंट, इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप उस पॉइंट पर आप इस सीक्वेंस को कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। जैसे यहाँ पर मैंने लिया, अभी मैंने 1/2 लिया या मैंने 1 लिया, जैसे मैंने 1/2 लिया, मैंने 1/2 पर इसको कैलकुलेट किया है, तो मैंने वहाँ चेक किया, वहाँ लिमिट इसका 0 आ रहा है। इस तरह से आप 1/3 पर कैलकुलेट करो, वहाँ पर इसका लिमिट निकालोगे, वो भी कोई ना कोई नंबर आ जाएगा। ओबियसली यहाँ पर तो 0 ही आ जाएगा, बट अगर आप डिफरेंट सीक्वेंसेस लोगे तो यू मे हैव डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट पॉइंट्स। और ये जो लिमिट है ना, ये इस वैल्यू पर डिपेंड करता है ना, इस वैल्यू आप वैल्यू चूज करोगे, पॉइंट टू पॉइंट वैरी हो रहा है ये जो लिमिट है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पॉइंट वाइज लिमिट, ओके। तो जो लिमिट फंक्शन हमने ली है वो हमने पॉइंट वाइज लिमिट लिया है, पॉइंट वाइज लिमिट हमने इसको, अब हम इसको प्रॉपर शेप देगी, इसको डिफाइन हम करेगी मैथमेटिकली, हम इस चीज़ को डिफाइन करेंगे, पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन जो है ना उसको हम डिफाइन करेंगे। ओके, so let's define it properly. So definition, let fn be a sequence of real valued functions defined on this interval, closed interval a b. Okay. A function, okay, if f and x this converges, sequence of real numbers converges for each x in interval I, okay, domain, then a function fx is said to be a pointwise limit, is said to be a limit function, is said to be a limit function or pointwise limit, pointwise limit of the sequence fn if for all epsilon positive and x belongs to interval AB, there exist n greater or equal to 1 positive integer n such that mod of fn x minus f of x, क्योंकि ये इसका लिमिट है, दिस डिफरेंस इज लेस देन एप्सिलॉन,
for all n greater or equal to n. Okay, so that m should exist. So our aim is to find which properties can be extended, that can be transferred to the limit function, from sequence of functions to the limit functions. So we check which property of the sequence fn can be transferred to the limit function, to its limit function, as in the above example, जो हमने भी एग्जाम्पल ली है, continuity cannot be transferred to the limit function. In fact, we can see that integrability, differentiability, all these properties cannot transfer. And when they transfer, वही actually हमें study करना है, हम किस केस में इन properties को transfer कर सकते हैं. So next we see the sum function. Okay, series अगर आपके पास tune होगी, that's the next. और यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट बात क्या है, आपने ये जो एप्स आपने क्या किया, आपने कहा कि फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव एंड फॉर ईच एक्स, ओके, देयर इज एन. ये जो एन है ना, ये कब आ गया, जब पहले आपके पास एप्सिलॉन भी था और एक्स भी था. सो नेचुरली इट डिपेंड्स ऑन बोथ एप्सिलॉन एज वेल एज एन एक्स. तो पॉइंट वाइज लिमिट है ना, ये पॉइंट वाइज लिमिट. तो पहले आपने एप्सिलॉन फिक्स किया और फिर आपने एक्स को भी फिक्स किया, फिर आपने कहा देयर शुड एग्जिस्ट एन. हाँ, अगर मैं ये कहूँगा फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एन सच दैट दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स फॉर ऑल एक्स, तो उस केस में एक्चुअली मैं पॉइंट को पहले नहीं ले रहा हूँ, मतलब उस केस में ये लिमिट पॉइंट वाइज लिमिट नहीं होगी. तो उस केस में क्या नाम है इसका, दैट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म लिमिट. वो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो जहाँ पर हम पहले पॉइंट को फिक्स नहीं कर रहे, जहाँ पर ये जो एन एग्जिस्ट होगा ये यूनिफॉर्मली हर किसी एक्स के लिए एग्जिस्ट होगा. वो हम कैसे लिख सकते हैं, उसकी लैंग्वेज क्या है लिखने की, उसकी लैंग्वेज ये है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव their existence such that this inequality holds for all x. तो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हम जिसको कहते हैं, यूनिफॉर्म लिमिट. सो एक्चुअली दैट्स अ प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी है इस सीक्वेंस की ना. अगर हम उस प्रॉपर्टी को ऐड करें देन आई थिंक दीज प्रॉपर्टीज ऑफ सीक्वेंस जैसे कंटिन्यूटी है, इंटीग्रेबिलिटी है, इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम सीक्वेंस टू लिमिट फंक्शन, अगर convergence, uniform convergence. So that we'll do, and that we'll see next section. So let's first define the series of functions. Okay, series of functions. Let fn be a sequence of it's understood that they are dependent on interval sequence of functions defined on closed interval AB, defined on closed interval AB. Okay,
defined on closed interval a b. Now if this sum, if for every point if the series, okay, if the series of, it's now a sum of real numbers, okay, if this one converges for every point, converges for every point x belongs to the interval I, then we define, now we can define the sum function. Then we define, because again the limit is unique, so the sum जो इसका sum होगा, that will obviously a function, this one. So this is the sum function for all x belongs to a. अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं. Let's take this example. Let's take this example, okay? तो यह यहाँ पर हमें चेक करना है क्या ये जो सम है, डज इट प्रिजर्व द प्रॉपर्टीज ऑफ द सीक्वेंस. मतलब अगर सीक्वेंस की प्रॉपर्टीज होगी, ये कंटिन्यूअस होगी, हर कोई टर्म इसकी कंटिन्यूअस होगी, क्या सम फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगी या डिफरेंशिएबल या इंटीग्रेबल, व्हाटएवर इट इज. सो लेट्स सी दिस एग्जांपल. लेट्स डिफाइन दिस हियर. Suppose this fn x is equal to x power n, okay? Let's try to find its sum. अभी हमने इसका लिमिट निकाला, अब हम इसका सम फंक्शन निकालेंगे. So what's this? Where here we have minus 1 less than x less than 1. So that, or we can say mod of x less than 1. Then what's sum? Okay. So this is actually x plus x squared plus x cube, and since mod x is less than 1, so this series is convergent actually. It diverges for x equal to 1, because for x equal to 1 it will be 1 plus 1 plus 1, that's infinite, and if x is greater than 1 then also it's divergent, because it will be, the sum will be infinite. But for x less than 1 it always converges, and if x greater than minus 1 it's also convergent. For x equal to minus 1 it again diverges, it's minus 1 plus 1 minus 1 plus 1, so it will oscillate, But whenever mod x less than 1, it lies between minus 1 and plus 1, it is convergent, and it's a geometric series. जो इसका sum है, that's 1 divided by what? What's its sum? 1 divided by 1 minus x. That's the sum of this geometric series. Okay, as this mod x is less than 1. अब यहाँ पर हम दो चीजें चेक कर सकते हैं. ये जो सम, that is your sum function f of x is equal to, इसकी जो sum function है वो ये आ गई 1 divided by 1 minus x. यहाँ पर आप दो चीजें चेक कर सकते हो. f1x, अगर ये सीक्वेंस आप लोगे f1x, इट्स x पावर 1 minus 1 less than x, क्या ये जो f1x है क्या वो बाउंडेड फंक्शन है? f1x on this domain minus 1 less than x less than 1, f1x, yes, bounded. Yeah, it's bounded है ना, it's obviously bounded. f1x equal to x power 1, तो obviously क्योंकि mod x less than 1 है तो x power 1 तो obviously less than 1 होगा. it's a bounded function है, it's bounded. इसी तरह से f2x जो होगा वो x स्क्वायर होगा, बट x की वैल्यू जो है minus 1 से लेकर plus 1 तक है. x square is also bounded. Even x cube is bounded, x power 4 is bounded. जो भी टर्म आप इस सीक्वेंस की लोगे, फर्स्ट टर्म लो, सेकंड टर्म लो, every term of the sequence is bounded.
बट व्हाट अबाउट दिस सम फंक्शन, क्या ये सम फंक्शन बाउंडेड है? ये जो सम फंक्शन हमने ली है ना 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, देखिए x का वैल्यू तो हम 1 नहीं ले सकते, बट x इज वेरी क्लोज टू 1, and whenever x approaches to 1, this sum function will approach to infinity. So that means this sum function is not, it's not bounded, it's not, but each term of the sum function is bounded. So here each f and x is bounded, each f and x is bounded, but f of x is not bounded. ये bounded नहीं है on this interval, open, sorry, it's open interval. देखिए इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है वो आप बता दीजिए मुझे. So you can see हर कोई टर्म बाउंडेड है, but the sum function is not bounded. हमने कंटिन्यूटी चेक की है, हमने बाउंडेडनेस प्रॉपर्टी को चेक किया है. बाउंडेडनेस प्रॉपर्टी जो है वो भी प्रिजर्व नहीं रहती फॉर सम फंक्शन. नाउ आफ्टर दिस विल चेक द डिफरेंशिएबिलिटी. डिफरेंशिएबिलिटी के साथ क्या होता है वो हम देखेंगे. सो दैट देयर इज वन मोर एग्जांपल वी हैव. Let's define this. Let f and x be equal to sequence of functions. Suppose this be equal to sin nx divided by root of n, and where is x? X is any real number. X is anything, any int. So यहाँ पर हर किसी x पर रीजन क्या है? बिकॉज साइन x इज डिफाइंड फॉर ईच x एक्चुअली. सो वेयर x belongs to r, so that's equal to minus infinity to plus infinity. So then what's its limit function? एक तो इसकी सम फंक्शन, सेकंड इज लिमिट फंक्शन. यहाँ पर हम लिमिट फंक्शन को चेक करेंगे. Sin of nx, sorry it's nx, okay, divided by what's the limit? देखिए sin n, अगर n को आप इन्फिनिटी लोगे, sin of infinity जो भी है, sin always lies between -1 and +1, है ना, always. So n approach to infinity, sin of nx is some finite thing. It's some finite thing. It lies between -1 and +1. It may be 1, it may be -1, it may be 0, it may be anything, but lying between -1 and +1, because the values of sin always lie between these -1 and +1. So the numerator is some real number whenever n approaches to infinity, but the denominator is always 0 when n is approaching to infinity. So it's equal to, the value is equal to, what will be it? Numerator is infinity, sorry, when n is approaching to infinity. So what's the limit function now? It is something, it's something, some real number divided by infinity. 0. It's 0. So limit function is 0. So thus the limit function f of x, which is equal to the limit function f n x, it's 0. So what will be the derivative of this limit then? इस लिमिट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? That will be 0. This means that f dash 0 जो होगा, that's also, because it is 0 function, इसका डेरिवेटिव तो f dash x is 0 for all x belongs to, or in particular f dash 0 is 0. So now let's check this. Derivative of the sequence.
उसका लिमिट फिर हम निकालेंगे। व्हाट्स द डेरिवेटिव ऑफ सीक्वेंस? कॉस ऑफ एन एक्स देन एन डिवाइडेड बाई रूट एन, and which is equal to root of n times cos of nx. Okay, so this implies the derivative at 0, it's root n, and which approach to infinity as n approach to infinity. तो आपने ये देखा, एक्चुअली आपने इसको आपने वेरीफाई किया है. This one you have seen. Thus, limit n approach to infinity f n dash x is not equal to f dash x for all x belongs to R. हर किसी x के लिए ये ट्रू नहीं है. बिकॉज रीजन क्या है? बिकॉज limit n approach to infinity f n dash 0 is infinity and f dash 0 is 0. अब देखिए क्या है आपके पास, लिमिट ऑफ एफ एन एक्स एफ एक्स था, ठीक है, बट लिमिट ऑफ एफ एन डैश एक्स जो है ना, इट्स नॉट इक्वल टू एफ डैश एक्स, इट्स नॉट इक्वल टू एफ डैश एक्स. ये आपने चेक किया इस एग्जाम्पल. इसके बाद हम इंटीग्रेशन पर आ जाएंगे. क्या इंटीग्रेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं लिमिट में? जैसे डिफरेंशिएशन को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. लिमिट ऑफ एफ एक्स एफ एन एक्स तो एफ एक्स है, बट इट्स डेरिवेटिव में ये प्रिजर्व नहीं रहेगा. ये लिमिट ऑफ एफ एन डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ डैश एक्स. ये आपने चेक किया यहाँ पर. नाउ वी चेक द इंटीग्रेबिलिटी. दैट्स द नेक्स्ट एग्जांपल. और यही सारी चीजें हमें इसमें चेक, पहले तो जो पहला सेक्शन होगा वो होगा इसका कंटिन्यूटी पर, कंटिन्यूटी कब प्रिजर्व रहेगी. सेकंड सेक्शन होगा डिफरेंशिएबिलिटी, सेकंड होगा इंटीग्रेबिलिटी, एंड देन थर्ड विल बी डिफरेंशिएबिलिटी. ये तीन चीजें हमें इसमें डिस्कस करनी है. इससे ये जो आपका चैप्टर है. नाउ लेट्स टेक दिस सीक्वेंस. एफ एन एक्स इज इक्वल टू एन एक्स then 1 minus x squared power n. Zero less or equal to x, less or equal to 1. Where this n, it varies from 1 to so on and so forth. Let's take this sequence. सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए हम चेक करेंगे क्या ये इसके बराबर है. सपोज लेट एफ ऑफ एक्स बी इट्स लिमिट फंक्शन. ओके, तो सबसे पहले जो हमें चेक करना है, वी चेक दिस थिंग. इज दिस लिमिट ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एन ऑफ एक्स, क्या ये इसके बराबर है? यहाँ पर 0 to 1 है रेंज. क्या ये इसके बराबर है 0 to 1 लिमिट ऑफ एफ एन एक्स? ओके, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको ये लिमिट निकालना होगा तो सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन करनी है. देन यू हैव टू कैलकुलेट इट्स लिमिट. और यहाँ पर क्या करना है, पहले आपको लिमिट कैलकुलेट करना है, देन यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द लिमिट. That means you are verifying whether the limit of integration is equal to integration of the limit. Limit of integral is equal to the integral of. ये आपको चेक करना है. So what we do first? We first find the limit function. We first find limit function. Now here you can see that this 1 minus x square for x equal to 0. For x equal to 0, this its value is 0. Okay, now we have f n 0 किसके बराबर है? ये 0 के बराबर है. You can easily verify for x equal to 0.
Now so that means limit at, which means that limit n approach to 0, n approach to infinity, sorry, fn 0 जो है वो भी 0 के ही बराबर है. अब हम x का वैल्यू लेस देन मान लेंगे. नाउ फॉर 0 लेस देन x लेस आर इक्वल टू 1, we have limit n approach to infinity fn x, this is equal to limit n approach to infinity. What's this fn x? It's x power n. Yes, it's nx, sorry, nx times 1 minus x square whole power n. X lies between 0 and 1. X not equal to 0, but x may be equal to 1. For x equal to 1, it is again equal to 0. So you assume that x strictly lies between 0 and 1. Then this 1 minus x, it lies between 0 and 1. तो ये जो वैल्यू होगा ना n के अंडर जो वैल्यू है, इट्स अ वैल्यू विच लाइज बिटवीन 0 एंड 1. और इसका जब आप पावर लोगे ना इन्फिनिटी पावर n, इसके पावर्स को जब आप इंक्रीज करोगे इट विल डिक्रीज. सो यू कैन सी दैट आप ये देख सकते हो कि ये जो इसका लिमिट होगा ये 0 आ जाएगा, इट विल बी 0 देन. अब आप ये कहोगे कि जब आप n को अप्रोच करोगे इन्फिनिटी, इट विल बी इन्फिनिटी टाइम्स 0, दैट्स इनडिटरमिनेट फॉर्म. देन यू कैन अप्लाई द रूल, ओके, L'Hopital's rule you can apply here, and you can see that its limit is always equal to 0, or you can do it like this: limit n approach to infinity, n को वही रखिए nx divided by 1 minus x square whole power minus n. So it's now infinity by infinity. Then you can differentiate numerator as well as denominator. तो न्यूमरेटर में तो n खत्म ही हो जाएगा, इसमें सिर्फ डिनोमिनेटर में रहेगा n. So whenever n approaches to infinity, this denominator will approach to infinity. You can easily wait because this thing lies between 0 and 1. और आप इसको ऐसा लिख सकते हो: nx divided by 1 divided by 1 minus x square power n. Okay, you can see this. This is infinity, this is also infinity. Why it is infinity? Because the denominator of this जो इसका denominator है ना, उसका जो denominator है 1 minus x square power n, अगर n, if n is approaching to infinity, इसका जो denominator it approaches to 0 because the base of this power n is less than 1. जैसे आपके पास बेस सपोज 1/2 है, अब अगर आप पावर इसको इंक्रीज करोगे, जैसे मैं पावर 1 लूँगा ये 1/2 आ जाएगा. अब अगर मैं स्क्वायर लूँगा ये 1/4. ये पावर, जब आप पावर को इंक्रीज करोगे ये डिक्रीज हो रहा है. तो वैसे यहाँ पर होगा 1 minus x square power n के पावर्स को जब आप इंक्रीज करोगे ये डिक्रीज होगा, और जब n करेगा ना अप्रोच टू इन्फिनिटी, दिस विल डिक्रीज टू 0, दिस विल अप्रोच टू 0. सो इट विल बी 1/0, दैट्स इन्फिनिटी. सो ऊपर न्यूमरेटर में भी इन्फिनिटी ही है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म. So then you differentiate the numerator as well as the denominator, and ultimately you will see that this limit is always equal to 0. So thus the limit function is always equal to 0, whether x equal to 0 or whether x not equal to 0. So thus f of x, which is equal to the limit function limit n approach to infinity fn x, it's equal to 0, where 0 less or equal to x, less or equal to 1. So what's therefore the integral 0 to 1 limit n approach to infinity fn x, it's equal to integral 0 to 1, that's f of x, but f of x is 0, it's equal to 0. Now let's find the integral. Now let's find this integral 0 to 1 fn x, then we'll find its limit. Let's see this. And this integral you can calculate this integral. मैं डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू ही दूंगा. You can easily calculate this, n divided by 2n plus 2. So now what will be its limit? This implies limit n approach to infinity 0 to 1 fn x
dx, that's equal to limit n approach to infinity n divided by 2n plus 2. Let's dividing numerator and denominator by n to find its limit. It will be 1 divided by 2 plus 2 by n. Okay, so this is equal to 1 by 2. So limit of integral is 1 by 2, but the integral of limit is 0. So thus integral of limit, thus integral 0 to 1 limit f and x dx is not equal to the limit of the integral 0 to 1 f and x dx. तो ये आपने चेक किया है, ये लिमिट भी प्रिजर्व नहीं रहता है. अब इसके लिए हम क्या करेंगे, we'll discuss यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एक्चुअली फॉर दिस. और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में हम क्या देखेंगे, ये चीज़ें पॉसिबल है. ये जो आप यस में अभी 11 बजे प्रेजेंटेशन है, ये एलिमेंट्री नंबर देने की एट 11. जी सर 11 बजे पे प्रेजेंटेशन. ओके, सो ये जो